Gahey & Associates, attorneys and counselors at law, specializing in immigration law. Now open. Forest Hills. And Ozone Park, Queens. Immigration, bankruptcy, divorce, personal injury. Call us for a free initial personal consultation at 718-263-5999. Gahey & Associates, attorneys and counselors at law. Hello viewers, this is attorney Naresh Gahey, and based upon a lot of requests from our viewers, we are going to continue our segment today on crimes and immigration. Yes, this has become a very popular topic. Yes, this has become very popular. Why? Because sometimes when people are getting charged with crimes and if they plead guilty, they're having serious immigration issues. Now, why is it so important for you to be away from crime, especially when it comes to your immigration matters? So we're going to talk about this at length, and we're going to get into a lot more details as we proceed further. Very first thing is that remember one thing. If you are a citizen, you don't have to worry about the immigration consequences of crimes. Because if you are a citizen, luckily you cannot be deported. I mean, if you've been charged with a criminal matter, except for if you've been, engaged in espionage, or if you've performed something which is very much anti-United States, that may be a different issue. But on the whole, under normal circumstances, a citizen cannot be deported. As I said, there are very few minor exceptions. Now, green card holders can be deported. Green card holders can be in trouble with the law if they commit certain crimes. Very often people think that the criminal court was very nice and finally they said you plead guilty to this offense and you pay a fine and you go home and that's it. And most people have a smile on their face and they think they're done away with all the criminal matters. This is incorrect, especially when it comes to green card holders, when it comes to people who are on non-immigrant visas, on other types of visas in the United States. Why? Because immigration is going to look at this entire criminal problem from their own perspective. It means you're looking at it from a very different perspective. The criminal court might have said, I don't want to deport you. But immigration says, yes, I think I want to deport you. The criminal court says that you pled guilty to a minor crime. But for immigration, that may be a crime involving moral turpitude. And that can become an issue of inadmissibility under Section 212 of the Immigration and Nationality Act. Now what happens? Example, you're a green card holder, or you're on an H-1B visa or a student visa, and you got charged with a crime and you pled guilty. After you pled guilty, you made a trip outside the United States and you came back. And when you are coming back, Customs and Border Patrol, which is CBP, they stop you and they said, I'm sorry, I have some bad news for you. Even if you've been living in this country for 20 years, 30 years or so, I have to send you before an immigration judge to see why you should not be deported from the country. Bad news for you. Not the best news for you. What you should do immediately, no sooner you enter the United States, speak to a very good deportation lawyer. Why? Because you may still have a chance to win the case before an immigration judge. Some people just give it up. They are so frightened, they are so scared, and they think there's nothing to be remained in the case. Recently, we got a case from a person who actually came to us and he thought he did not have a case at all. And we figured out that he had a case because he was eligible for relief under 212C of the Act because the crime occurred before 1996. So we were able to get him 212C relief. So the bottom line is that there may be some relief available to you, but at the end of the day, anytime if you are charged with a crime, even if you're applying for citizenship, be very careful. Where do people get picked up sometimes?
When they have a criminal record, they apply for citizenship, and when you apply for citizenship, the officer may tell you to wait over there, or immigration may be waiting there for you to even pick you up over there if the crime is serious. Yes, that has happened, and I've had live examples of people who went for the citizenship interview. They've been picked up, handcuffed, and they've been in immigration detention. Question is that be very careful. Even if you have the smallest crime, there's no harm for you to consult an attorney, because this can become a very devastating experience for the entire family, especially when you pled guilty to a crime. Now, the second part of this segment deals with people whose relatives are actually in immigration jail, or whose relatives have been sent back to the home country because they pled guilty to something that they did not know about. So there may be some good news for you. If your relative or friend did not know the nature and consequences of his action, for example, he had a legal aid lawyer who told him just plead guilty and that's the end of it. And when this particular person was in criminal court, the legal aid lawyer or the other lawyer, the private lawyer that he had, failed to advise him about the immigration consequences. And it is on the record very clear that this particular person was never informed about the criminal consequences. You may have a case. In the recent Supreme Court decision, you can even file a motion to reopen those cases, and if there is relief available from the criminal court, your relative can come back to the United States. Of course, you're looking at a very difficult chance, but this may be one of the possibilities in your case. Sometimes people get charged with drug-related offenses, and they think that it's the end of the world. But they do not know that sometimes when you get charged with having less than 20 grams of marijuana in your possession, you can still apply for a waiver under 212 of the Immigration and Nationality Act. Bottom line is that we have waivers available. You may have relief under cancellation of removal if you've been in this country for a long time. Plus, if you have children and if you have parents, if you have a spouse here, you may still be eligible for cancellation of removal under Section 240 of the Immigration and Nationality Act. The bottom line is that speaking to a seasoned deportation lawyer is very important for you. Even if you have a complex immigration matter, it's good for you to consult someone who handles deportations, because when you handle deportations, you're dealing with the worst of the cases. So therefore, recently we had clients who had serious H-1B issues. We were able to help them. We have clients who have serious L-1 visa issues. We've been helping them. So the bottom line is that if you have a complex immigration matter, we would be more than happy to help you. And besides that, there were some other questions from our viewers with reference to marriage-based immigration. And this is what a person said. Mr. Gehi, I have some very sad news. I got married to an American citizen and I went for the interview. And I did not pass my first interview. What is going to happen? Firstly, very sorry to hear that you did not pass your interview the first time. Second time, you're going to have a very difficult interview, because you may have a Stokes interview, and in the Stokes interview, both are going to be separated. And after that, if your answers don't match, you're looking at trouble. You're looking at your case getting denied. And if the case gets denied, you can be in deportation proceedings. Things are not as easy as before. And the recent news which I'm getting is that when people's cases are getting denied, they are getting letters to go and see an immigration judge. We call it as a notice to appear before an immigration judge in the legal world. Bottom line is, do not take any chances with your case, especially if you're illegal in this country. You overstayed your visa. Sometimes people have a tendency of filling out the forms on their own, and when they go for the interview, immigration may pick you up, because if you had an outstanding order of deportation, that has happened too. So keep those things in mind. And if any further questions, you can come in and see us. And our phone number, as always, is 718-263-5999. And the first initial person consultation is free. And we have 2 offices, one in Forest Hills and one in Ozone Park. We open from Mondays to Saturdays, and we handle immigration cases from all over the United States and the world. And now on a very, very important note, remember
that deportation is something which is very serious. Even if you have been ordered deported, you may still have some chance of reopening a deportation case. There have been people who came to us, they were ordered deported, and we were able to reopen, some of the cases. So if you are in that situation, you may still be eligible for reopening of your case. So we'll be back again with our viewers with some more important news from the world of law. The Intern program constitutes an attorney advertisement under the laws of the state of New York. And this is Attorney Gehi, and we'll be giving you some more interesting news as the law progresses, and we'll always keep you informed. Gehi and Associates, attorneys and counselors at law, specializing in immigration law. Now open. Forest Hills and Ozone Park, Queens. Immigration, bankruptcy, divorce, personal injury. Call us for a free initial personal consultation at 718-263-5999. Gehi and Associates, attorneys and counselors at law. हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दिस इज अटॉर्नी नरेश गेही, और आज हम दर्शकों से बात करने जा रहे हैं कुछ बड़े ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में। बड़े इम्पोर्टेंट विषय के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ख़ास तौर लोगों के लिए जो यहाँ पर बहुत साल से हैं और वो यहाँ पर इस कंट्री में 10 साल से ज़्यादा रह चुके हैं और वो आज की तारीख में अपना ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं। आपके लिए खुशखबरी है कि चाहे आप यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, चाहे आप वीज़ा लेकर आए और उसके बाद आप यहाँ पर रह चुके हो और आप इलीगल हो चुके हो, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपके यहाँ पर बच्चे हैं जो अमेरिकन सिटीज़न हैं और जो थोड़े बड़े हो चुके हैं, या आपके मदर और फादर है, पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर ग्रीन कार्ड होल्डर है या सिटीज़न है, उनकी बेस पर आप यहाँ पर 10 साल का केस दाखिल कर सकते हैं। तो इसके रिक्वायरमेंट्स में बड़े साफ आपको कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर 10 साल से ज़्यादा फिनिश हो जाने चाहिए। मतलब जैसे आप इस कंट्री में 2002 में आए और आप 2012 तो 10 साल हो चुके। आपके बच्चे हैं यहाँ पर जो यहाँ बॉर्न हुए और वो बड़े हैं यहाँ पर। कुछ बच्चे आपके जो है कि 10 साल के हैं, कुछ आपके बच्चे उसके ऊपर ओवर भी हो सकते हैं, तो और आपके पेरेंट्स भी है यहाँ पर जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, यहाँ सिटीजन है, तो उस बेस पर आप 10 साल का केस दाखिल कर सकते हैं। एक बार अपने 10 साल का आप केस दाखिल करोगे तो उसके बाद आपको कानून में बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप प्रूफ करनी पड़ती है, जैसे एक्सट्रीम, एक्सेप्शनल एंड अनयूजुअल हार्डशिप। और इसके अंदर जो लीडिंग केस लॉज है, दे आर द मैटर ऑफ रेसिनास, मैटर ऑफ एंडोजोला एंड द मैटर ऑफ मॉन्ट्रियल। These are the leading case laws. और इन केसेस के मुताबिक अगर जी आप अपना केस आप प्लीड करते हैं और आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल हो सकता है। जी हाँ, ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हमने लोगों को हेल्प किया है और उन लोगों को अमेरिका में अपना ग्रीन कार्ड हासिल हुआ है। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप मेरा शो देख रहे हैं, आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, या आप किसी भी कंट्री से हैं। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि पाकिस्तान के जैसे, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, ये बताया जा सकता है कि बच्चों को बहुत तकलीफ़ होगी, पेरेंट्स को तकलीफ़ होगी और वो सिटीजन है यहाँ के और वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, तो उस बेस पर आप अपना केस फाइट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो आप पाकिस्तान से हैं, आप आज की तारीख में नए हैं और जैसे आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तकलीफ हुई है, या आप शिया हैं और आप अपना रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप हिंदू हैं या आप क्रिश्चियन हैं और वहाँ पर अपना रिलीजन सही तरह से नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती है और जैसे आपको धमकियाँ मिलती है, तो उस बेस पर आप पॉलिटिकल असाइलम भी कर सकते हैं। और जब आप इंडिया से हैं और आप 10 साल से ज़्यादा रह चुके हैं यहाँ पर और आपके पेरेंट्स जो हैं उनके हेल्थ में बहुत तकलीफ़ है, जैसे आपका कोई पेरेंट व्हील चेयर पर है या आपके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उस बेस के ऊपर भी आप अपना केस यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपना ग्रीन कार्ड जीत गए जाएंगे तो आप यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो याद रहें कि ग्रीन कार्ड के
का एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका 10 साल के केस के मुताबिक होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन से शादी करते हैं, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे केसेस मैंने मैरिज बेस्ड इमिग्रेशन के किए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें सफलता मिली है। तो अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं कि जहाँ आप यहाँ पर शादी करना चाहते हैं और अमेरिकन सिटीजन से, और आपकी शादी बोनाफाइड है, मतलब आप उनको के लाइफ पार्टनर बनने के लिए आप शादी कर रहे हैं, तो एक बेहतरीन तरीका है जिसके मुताबिक आपको तकरीबन 6 महीने में आप अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स के मुझे कॉल आते हैं कि बोले गई साहब, मैंने पहले 2-3 बार शादी की और तीनों बार मेरी तकदीर इतनी बुरी थी कि मैं अपना ग्रीन कार्ड नहीं हासिल कर पाया और मेरी शादी टूट गई और उसमें मुझे बहुत तकलीफ़ें थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब होता है ज़िंदगी में, मगर अगर आप आज के तारीख में भी अपसेट होना चाहते हैं तो मैरिज शायद आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। कभी कभी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं यहाँ पर जिनको बहुत साल हो चुके हैं, अब उनके बच्चे सिटीजन हैं यहाँ पर, वो 21 से ऊपर है, उसके थ्रू भी आप अपना केस हासिल करके फाइल करके आप अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। मतलब आपके बच्चा जो है 21 साल का है, जो US सिटीजन है, और आप यहाँ पर वीज़ा लेके आए थे और आप उनके पेरेंट्स हैं और आप यहाँ पर इलीगल है, तो उसके थ्रू भी आप अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोवाइडेड आपके केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। कभी कभी कुछ ऐसे लोगों का मुझे कॉल आता है कम्युनिटी से कि गई साहब, मेरे जानने वाले को इमिग्रेशन ने अभी अभी पिक किया है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमारे ऑफिस में एक हॉटलाइन है उन लोगों के लिए जिनको पिकअप किया जाता है, और अगर जो आपको या आपके रिश्तेदार को या आपके दोस्त को पिकअप किया गया है तो आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और आपको उस वक्त अपॉइंटमेंट बना के देने की ज़रूरत नहीं होती। आप वॉक करके आ सकते हैं, बोले गई साहब मेरा दोस्त जो है जेल में, आप प्लीज़ उनको बाहर निकालें। उन केसेस में हम ये करते हैं कि पहले उनको बॉन्ड पे बाहर निकालते हैं ताकि कम से कम उनके फैमिली के साथ यूनाइटेड हो। पूरी कोशिश करते हैं कि बॉन्ड के लिए फ़ाइट करने की, और बॉन्ड मिलने के बाद फिर बाद में देखा जाता है कि उस इंसान का ग्रीन कार्ड किस तरह से हासिल करवाया जा सकता है। अगर जो आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर आपके ऊपर डिपोर्टेशन लग चुकी हो तो भी वो खुलवाने की कोशिश की जा सकती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि डिपोर्टेशन खुल नहीं सकती, ये गलत बात है। हर डिपोर्टेशन का केस नहीं खुल सकता, मगर कभी कभी गवर्नमेंट हार्डशिप देकर उन केसेस को खोलती है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके रिश्तेदारों को यहाँ से पिकअप किया गया है और उनको वापस इंडिया भेजा गया है या पाकिस्तान भेजा गया है, तो उन लोगों के लिए भी एप्लीकेशन करके हम उनको वापस बुलाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अब एक अलग ही विषय पे बात करेंगे, सिटीजनशिप के बारे में। हमारे कम्युनिटी में ख़ासतौर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बहुत सारी कम्युनिटीज़ में, नेपालीज़ में लोग जो है कि इंग्लिश सही तरीके से नहीं बोलते हैं और वो चाहते हैं कि सिटीजन बने। तो हमारे ऑफिस में एक स्पेशल फैसिलिटी है आपके लिए, जहाँ पर अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं तो हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन भर सकते हैं, और सबसे अच्छी आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि हम आपके साथ इंटरव्यू पर साथ में जा सकते हैं। मतलब जब आपके इंटरव्यू की ऑफिसर यहाँ बैठा होगा, वहाँ आप बैठे होगे और आपके साथ में अटॉर्नी बैठेगा, और ये कानूनन अलाउड है, और आपका केस फाइट किया जाएगा। और अगर जब बेसिक इंग्लिश बोलते हैं तो भी आप यहाँ पर सिटीजन बन जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे जिनको उम्मीद नहीं थी कि वो सिटीजन बन पाएंगे, उनका केस हमने टेक ओवर किया और आज की तारीख में वो लोग यहाँ पर सिटीजन बन चुके हैं। हर इंसान सिटीजन नहीं बन सकता, कोशिश करना लॉयर का फ़र्ज़ बनता है। बाकी जैसे कहते हैं कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। अगर जो आप ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आपको किसी भी तरह की इमिग्रेशन की तकलीफ़ हो, जैसे आप लीगल बनना चाहते हैं मैरिज बेस पर, या आप 10 साल से ज़्यादा रह चुके हैं, या आप पाकिस्तान जैसी कंट्री से हैं जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ, आप असालम फाइल करना चाहते हैं, या इफ़ यू हैव एन H1 इशू, या अगर जो आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड इमिग्रेशन मैटर है, तो हमारी 2 ऑफिसेस हैं।
फॉरेस्ट हिल्स के ऑफिस का नंबर है 718-263-5999 और हमेशा की तरह हमारी फर्स्ट इनिशियल पर्सनल कंसल्टेशन फ्री है। आएँ और अपने इमिग्रेशन मैटर्स को आप स्ट्रेटन अप करें और अपनी लाइफ यहाँ पर सेट करें। और हमारी ऑफिस मंडे थ्रू सैटरडे खुली होती है, ओजोन पार्क में भी और फॉरेस्ट हिल्स में भी। अगर जी आप कहीं भी ये शो देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि हम इमिग्रेशन के मैटर्स ऑल ओवर यूएस के हैंडल करते हैं और दुनिया की तरफ के। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉल 718-263-5999। द इंस्टेंट प्रोग्राम constitutes an attorney advertisement under the laws of New York, and we'll be back again with some more interesting news to our viewers from the world of law. Gay & Associates, attorneys and counselors at law, specializing in immigration law. Now open. Forest Hills and Ozone Park, Queens. Immigration, bankruptcy, divorce, personal injury. Call us for a free initial personal consultation at 718-263-5999. Gay & Associates, attorneys and counselors at law.